شروع ہوئی اور رخ مڑ گیا مسٹر بھٹو کی طرف. اس دوران کیا ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ آ گئی چارجنگ مسٹر بھٹو فار دی مرڈر آف ہز فادر؟ کہاں کمپلینٹ میں یا اس کیس میں؟ نہیں, اس کیس میں کمپلیننٹ کی پھر بعد میں انویسٹیگیشن جو شروع ہوئی اور وہ انویسٹیگیشن کا رخ جو تھا وہ مسٹر بھٹو کی طرف مڑ گیا. یہ 77 کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی, تو اس دوران ان کی کوئی ہاں آئی ہے, ان کا تو کورٹ میں بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کورٹ سے پہلے نہیں, کورٹ سے پہلے انویسٹیگیشن میں ڈیفینیٹ آئی ہو. وہ کمپلینٹ فائل کی وہ بتا رہے ہیں. جب وہ کمپلینٹ فائل کے بعد کہہ رہے ہیں کہ سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کو نہیں, وہ میرے علم میں اس پہ ایف آئی آر میں تو نہیں ہے نا, ذکر تو ہے بھٹو کو. ان کا کیس کورٹ میں بھی یہی ہے کہ یہ انہوں نے پورا نریٹ کیا ہے کس طرح میں نے پارٹی جوائن کی, کس طرح میں نے مخالفت کی, کیا کیا گراؤنڈ تھی میری مخالفت کی. میں ان کے فیصلے کے خلاف ایسٹ پاکستان اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرنے چلا گیا. اگر واپس میں پھر واپس بھی پیپلز پارٹی چلے گئے, بڑا کچھ باتیں ہیں. بالکل چلے گئے, بالکل چلے گئے. انہوں نے ٹکٹ مانگا 77 میں, پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ڈینائیڈ ہوا. انہوں نے باہر کے ملکوں میں Managed WordPress hosting by Hostinger. Here are 3 super features to improve. یہاں پہ وہ جو آرڈر آپ نے پڑھا اس میں لکھا ہے اگست میں شاید کی ہے. آف وچ ایئر؟ 77 جب ماشاء اللہ لگ گیا. وہ تو پھر آپ ان کا میری سمیشن یہ ہے کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کے لیے ان کا سٹیٹمنٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے. اسٹیٹ زیادہ انٹرسٹڈ لگ رہا تھا نہیں, کمپلیننٹ سے زیادہ. چلیں جیسے ان کا سٹیٹمنٹ ریلیونٹ ہی نہیں ہے, میں اس کو ٹچ ہی نہیں کرتا, میں اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہتا. چلیے آگے چلیں, کیونکہ وہ بڑا لمبا ہے. وہ جو باتیں موٹی موٹی آپ نے پوچھی ہیں کہ ہی ری جوائن دا پارٹی, ہی اپلائڈ فار دا ٹکٹ, ہی ہیز ایڈمیٹڈ دس فیکٹ. He admitted this fact in cross-examination. That's applied. But he said this was my strategy because I had a fear and so I wanted to protect myself. یہ ان کی explanation ہے, but یہ fact admitted. But میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں جو سبمٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ there was only one witness against Bhutto. One witness, and that is Masood Mahmood. If your lordship accept his testimony, if your lordship comes to the conclusion that he is speaking the truth, his evidence inspires confidence, it is natural or probable, then that remaining evidence may be considered as supporting or corroborating. Then consider. But if your lordship comes to the conclusion that this evidence of the witness is not reliable, it does not connect Bhutto, it does not inspire confidence in the mind of a prudent man, then there is no need of going further. Then to the extent of Bhutto, the case is over because no other witness has charged Bhutto. You are taking us now to the testimony of Masood Mahmood. Yes, sir. I was taking you to the testimony. اب میں یہ دینا بھی اس کی ٹیسٹیمنی دے دوں. پیج کون سا ہے؟ اب میں اس کے بڑے ہی تھوڑے پورشن پڑھوں گا تاکہ جناب کا ٹائم بچ جائے, کیونکہ یہ جو کراس ایگزامن چیف ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرسٹلی آئی ول کنفائن مائی سیلف ٹو دا ایگزامینیشن آف چیف اونلی. I will not touch the cross examination. And PW2, sir. Masood Mahmood, PW2 is examination chief consists of around 17-18 pages. But I will read just 10 pages. Ji. And thereafter I will make page volume 2, page and thereafter 64. Thereafter, sir. And thereafter I will, after reading this, after reading the examination chief, thereafter I will make the submission and I will show that if this evidence, this statement is accepted that there was no cross examination on behalf of Bhutto, even then this cannot be trusted. That is کون سا پیج چلیں؟ page 64. Malik sir, he was also executed.
नहीं, he was a prover, madam, he was a prover. और भी तो उसमें एग्जीक्यूट हुए। नहीं, अप्रूवर को तो माफी मिलती है तो वो बयान देता है ना जी, उसको तो बस एग्जीक्यूट हुए हैं अप्रूवर। नहीं, इस केस में तो कोई अप्रूवर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अप्रूवर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड मैम, बिकॉज यू हैव टू ग्रांट हिम पार्डन। तो बड़ा मेजर हाँ, चूंकि लॉ को अप्लाई नहीं किया तो इसलिए मैंने पूछा। हो सकता है बाद में उनको भी कर देते हैं, काम निकालने के बाद उनको भी कर देते हैं। नहीं, वो बड़ा क्लेवर था, उसने दोनों तरफ खेला है। वेरी क्लेवर मैन ही इज। ये मैं कुछ जाती राय नहीं दे रहा, मैं तो उनको देखा भी नहीं। जो इमर्ज हो रहा है इस एविडेंस से, मैं उसको रेफर कर रहा हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेज बताए, करूँ शुरू सर? पेज 64 आपसे पूछ। PW2 Masood Mahmood, son of late Abdul Ghani, 54 years of age, formerly Director General FSF on SA. SA is solemn affirmation. At that time, the statements were not recorded on oath. It was on... पता है हमें। मुझे नहीं पता सर। I joined the police service. ये स्किप करें क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सारी चीज है, ये स्किप नहीं होगा। अच्छा, ये हो आपने चलें फिर पढ़ी मैं आपको पहले बता ना मैं आपको बता देता हूँ मैं चाहता क्या हूँ। इस सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ के आपसे 3 चीजें मैं कहूँगा। एक के भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई इस स्टेटमेंट से, मसूद महमूद की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई, और टास्क क्या था मसूद महमूद को लगाने का। तो फिर मैं कहूँगा कि क्या इसकी सीवी जो है उसको देख के इसको ये टास्क असाइन हो सकता है? प्रूडेंट मैन मानेगा। आप ड्राइवर रखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि इज अ गुड ड्राइवर, यही है ना। अब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप उसको ड्राइवर तो नहीं रखेंगे। ये इसलिए बड़ा जरूरी है ये स्किप, ये इसको मैं पढ़ूँ। I joined the police service of Pakistan in September 1948 after completing my training at the Police Training College in East Pakistan. I served in various capacities in the province. The last post that I held in East Pakistan was Additional Superintendent of Police, West. I served as Superintendent of Police and later as Deputy Inspector General. In 1965, I was selected as Deputy Secretary Central with headquarters at Ankara. Before that, I had served as the Deputy Secretary both in the provincial and central government, beside holding some other posts. I returned to Pakistan in September 1970 at my own request. On my return, I was asked to wait for post. After some time, I was posted as Deputy Secretary, Ministry of Defence, and later promoted as Joint Secretary and Additional Secretary in the same ministry. I may mention that despite my best efforts, I failed to see Mr. Wakar Ahmed, the Establishment Secretary, during those days. I was promoted as Additional Secretary and then transferred to a punishment post, that is Managing Director, Board of Trustee of the Group Insurance and Benevolent Funds in the Establishment Division. I may mention here that I had already been superseded by 4 juniors. I was asked by Mr. Wakar Ahmed to call on the then Prime Minister in the morning of 12th of April 1974. I was told that I had to call on Mr. Wakar Ahmed before this interview. Mr. Wakar Ahmed was very good to me at that meeting, and he informed me that the Prime Minister was going to offer an appointment to me, which I must accept. आगे उनका objection है, मैं उसको छोड़ देता हूँ. Mr. Wakar Ahmed's name is not mentioned. He drew my attention to the state of affairs of myself and my wife, to the fact that I had small children, and to rule which provides for recruitment at the time of officer of grade 21 and above. The impression that I carried on my mind was that my job was at the mercy of the Prime Minister and Mr. Wakar Ahmed. I then had my first interview with the Prime Minister after he had assumed the office. At this interview, the Prime Minister said kind word to me, reminiscences about our past associations, praised my, ये बड़ी ज़रूरी है, praised my integrity, hard work, and offered me the appointment of Director General of FSF. I was directed by the then Prime Minister
not to accept instruction from then Minister for Interior, Mr. Abdul Qayyum Khan. I was advised by him against the termination of services of the re-employed officer without taking his prior permission. He told me that they were useful officers. Mia Muhammad Abbas was particularly mentioned. The Prime Minister asked to be on the right side of Mr. Waqar Ahmed. He particularly mentioned about the state of health of my wife, my children, and the fact that I had young children. The then Prime Minister told me that I need my job and I was expected to raise the force into deterrent 1. The Prime Minister told me that Mr. Waqar Ahmed did not like me, and it was in this context that he had asked me to be on his right side. The Prime Minister spelled out what he meant by making the force a deterrent 1 by telling me that he wanted the people of Pakistan, his minister, MNAs and MPAs to fear it. The Prime Minister told me that a written directive has been issued to the force for setting up an intelligence wing. उसके बाद मैं skip करके सर next page के पैरा आ रहा हूँ. I assume charge. ये मैं skip कर रहा हूँ. I assumed charge of the post of Director General of FSF on 23rd of April 1974. The duties of the incumbent of the post which I had accepted are contained in the Federal Security Force Act 1973. This was besides the charter given to me orally by the Prime Minister. The Prime Minister wanted the force to be available to him for political purposes. On an objection, ये भी मैं छोड़ता हूँ. अब नीचे आ गया. In the ये किस लिए बनाई गई? Number A, breaking up of political meetings, harassment of personage from both in his own party and opposition, induction of plainclothes person in public meeting addressed by him to swell the crowd. By plainclothes men, I meant those who were enrolled in the FSF. I had been giving direction to the presence to be present at all the places where the Prime Minister toured. I was also given direction to be present in the National Assembly chamber if the Prime Minister was attending the session or if he was in its own chamber in the National Assembly. उसके बाद मैं skip कर रहा हूँ. Next page पे पैरा शुरू हो गया. In June 1974, when Mr. Ahmed Raza Kasuri was speaking in the National Assembly, Mr. Zulfiqar Bhutto addressed him directly and not through the speaker as follows. He asked him to keep quiet and he had enough of him and that he would not tolerate his nuisance anymore. This is more or less what the Prime Minister said. A day or two later, I was sent for by the Prime Minister. He inter alia said to me that he was fed up with the obnoxious behavior of Mr. Ahmed Raza Kasuri and that Mia Muhammad Abbas, an officer of the FSF, knew all about his activity. This officer is an accused in this case. The then Prime Minister further told me that this officer has already been given direction through my predecessor to get rid of Ahmed Raza Kasuri. ये अब वो कंस्पिरेसी पहले से ही है. इस ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है मियां अब्बास को, पहला जो इनका प्रीडिसेसर है. The Prime Minister went on to instruct me that I should ask. The Prime Minister further told me that this officer mean Mia Abbas, वो जो ऊपर नाम आया ना, already been given directions. अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप ये इसको नोट कर लेंगे कि इसको डायरेक्शन हो गई है. Wasn't the direction to Muhammad Abbas in itself sufficient? सर मैं इसी पे आगे बात करूंगा. मैं सारा पढ़ लूं थोड़ा ताकि इसमें बहुत इंटरेस्ट की बातें हैं. मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं चीफ पे बहुत कम जाऊंगा, सिर्फ 2-3 उसके पैरे पढ़ूंगा. मैं इससे ही आपको परसुएट करने की कोशिश करूंगा कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है. दिस इज माय टास्क.
to get rid of Mr. Ahmad Raza Kasuri. The Prime Minister went on to instruct me that I should ask Mia Muhammad Abbas to get on with the job and to produce the dead body of Mr. Ahmad Raza Kasuri or his body bandaged all over. He said to me that he would hold me personally responsible for the execution of this order. I was, ye bada important hai, I was naturally shaken to hearing these orders and pleaded with him that execution of these orders would be against my conscience and would certainly be against the dictates of God. यहाँ मैं pause करता हूँ. Where is the conspiracy? Where is the conspiracy? If we accept that this was said to this witness by the then Prime Minister Zulfiqar Bhutto, and he says, sir, no, this is against not only my conscience but against the dictates of God. Now if your lordship look at the definition of conspiracy in section 120A, so does it fall under that, sir? मैं तो चाहता था कि मैं जरा डिटेल पढ़ के इस पे बात करूं, मगर अभी अगर आप इसको देख लें, मैं देख ही रहा था, क्या मैं क्या करूं? I can multitask. इससे ये लग रहा है कि जैसे वो एक उसको बता रहा है, इन्फॉर्म करना है कि ये मैं तय कर चुका हूँ. और वो आगे मैं बताऊंगा ना कि अगर उसको बताना ही मकसूद था कि काम कर दो, तो फिर इसको बताने की क्या जरूरत है? कंस्पिरेसी की बेसिक चीज तो सीक्रेसी है कि मैं एक बात दूसरे को नहीं बताना चाहता. ये बताएं, ये जो अपने मियां मोहम्मद अब्बास साहब थे, इनने कन्फेशन किया था? कन्फेशन किया, रिट्रैक्ट किया. नहीं, उनने जो कन्फेशन किया था उसमें उनने क्या फरमाया? उसमें यही फरमाया कि जी हाँ जी ये ठीक है, ये साजिश हुई थी, मुझे इसने भी कहा था. इसने कहा था? महमूद ने भी कहा था, पहले ने भी कहा था, पहले भी नहीं कहा था, मगर वो रिट्रैक्ट कर गया. उसका कन्फेशन हाई कोर्ट ने भी यूज नहीं किया अगेंस्ट भुट्टो, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट में फिर उसने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी वो मैं रिट्रैक्ट गलत किया था, मैं सही कर रहा हूँ. उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे. दिस आई एम रेफरिंग फ्रॉम मेजॉरिटी जजमेंट. His statement was not considered. My question is, I am stopping here. Just what was my purpose to involve this man? अब आगे पढ़ेंगे तो और बातें आएंगी. Just to convey this message to that Ghulam Abbas, Mia Abbas. So it could be conveyed to somebody else. It could directly be called by the Prime Minister. तो भी क्या किया? अब आगे देखेंगे तो और बातें आएंगी. पढ़ूं सर फर्दर. आगे जी. The Prime Minister lost his temper and shouted, saying that he would have no nonsense from me or from Mia Muhammad Abbas. Then he raised his voice and said to me, "You don't want Bukar chasing you again, do you?" I returned to my office in that perplexed state of mind. अब ये बड़ा important है कि the man is ordered or asked something by the Prime Minister. He has not said, yes sir, हुक्म की तामील होगी जो हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर इवन जुडिशरी में हर जगह करते हैं. उसने ये नहीं कहा. उसने कहा, नो सर, आई कांट डू दिस. This is against my conscience, and not only conscience, this is against the dictates of God. And then he says, in this perplexed state of mind, he came to his office, he called me Abbas and narrated that order verbatim. He didn't say that I asked him to do this. ये वकार अहमद कौन थे? वकार अहमद establishment secretary थे, but he is not witness in this case. He wasn't produced. No. तो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं behind his back. पता नहीं जी, सारे ही करते हैं behind back पे ही तो बातें होती हैं, फ्रंट पे तो बहुत नहीं. ये तो रिकॉर्ड हो रहा है testimony. हाँ ये सही है बात. नहीं भाई, if he is attributing things, then you should have been summoned. मैं फिर repeatedly request कर रहा हूँ कि मैं तो time conscious हूँ. इतना interesting ये statement है, इतने interesting इसमें point है, ना कि facts के बल्कि law के. मैं तो चाहता हूँ सुने इसको. ये अभी तो मैं इधर रुका हूँ ना कि सिर्फ इससे ही देख लें कि क्या इसकी जरूरत थी बुलाने की. अब आगे बड़ी मजेदार बातें आएंगी. अभी आप इसको देखिए. बड़ा ये अब एक स्टेज पे ये बिल्कुल मोमेंट बनेगा. ये कहेगा कि आई हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड.
अब अनफ्लिंचिंग फेथ जिस बंदे का अल्लाह के पास अल्लाह में है तो क्या वो बदलता रहता है? जी 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 ठीक, कंटिन्यू करो। जी 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 जी। अच्छा, Whenever you're tired, we'll stop. सर it all depends on you। अभी मेरा इसमें 1.5-2 नहीं नहीं, आप चलें चलें चलें। आपका कितना टाइम हो? सर अभी कोई घंटा 1.5 और लगेगा, ज्यादा लग जाएगा तो इसमें, क्योंकि बड़ी सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस है। आप बताएं बताएं। 1.5 घंटा लगना। बताएं, कंटिन्यू। हाँ टाइम लगेगा सर इसमें। घंटा लाने जो मौका जो। अच्छा ठीक। ऐसा कह रहे हैं जी। चलें थोड़ा लेट्स एक की विटनेस तो खत्म करें। ये तो नहीं खत्म होनी सर। हाँ इसका चीफ खत्म हो जाएगा। चले लेट्स सी। हाँ चीफ खत्म हो जाता है। ये अगर घंटा आप कह रहे हैं तो मेरे साथ 2 घंटे कह रहे हैं। मैंने कहा था कि 2 घंटे के गए पूरा इसको एग्जामिन करना है। देखिए आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट टाइम, बट लेट्स मेक सम प्रोग्रेस। अभी तो टाइम है थोड़ा। मुझे कोई इतराज नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, चीफ पढ़ लेते हैं फिर बात करें। चीफ पढ़ लेते हैं ताकि वो फिर बाकी बातें बड़ी लंबी हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। ये सर अब आगे आ गया। मियां अब्बास, आई रिपीटेड टू हिम द ऑर्डर्स ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर वर्बेटम। ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर, ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर, ही इज नॉट गिविंग हिम डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं कि मुझे फलां ने ये कहा है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर मियां अब्बास को कहते हैं कत्ल करो, फिर इसको बुला के कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब, कहते हैं, मैं बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर को बता रहे हैं सर। नहीं सर नहीं, क्या मतलब है सर? अब मुझे तो मतलब नहीं पता, ये तो केस है आपके सामने, मैं तो इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, मुझे उन्होंने फरमाया कि ये आई वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर कसूरी, अल्लाह उनको जिंदगी दे। ये वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा, और ये टास्क ऑलरेडी हैज बीन असाइंड टू मियां मोहम्मद अब्बास थ्रू योर प्रीडिसेसर। ये वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अब उन्होंने इसको कहा कि उसको कहो कि इस काम को करे। आगे से ये फरमाते हैं कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे कॉन्शियस के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तो मैं नहीं कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर अपना टेम्पर लूज करते हैं और इसको कहते हैं कि डू यू वांट टू दैट यू वकास कीप ऑन चेजिंग यू। अब वकार के साथ इनका क्या मसला है वो कुछ नहीं पता। ये कहते हैं मैं उसी परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में अपने दफ्तर आया हूँ, उसको मैंने बुलाया, मैंने वर्बेटम रिपीट कर दी एंड That's all। अपने तौर से कुछ नहीं कहा। वो तो आगे आएगा ना, जो पूछा हुआ है वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो इसको आज पढ़ लेते हैं ना जी, बाकी फिर देख लेंगे। वो कहता है मेरा एक जो देखें, ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे। सर नहीं, बहुत फायदा सर, प्लीज। मैं देखिए, मैं पता नहीं, मैं मगर मुझे देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने वाइफ मेड दिस कमेंट, अ पर्सन बिकम्स पार्टी टू एन इलीगल एक्ट for joint benefit, mutual benefit, that could be one thing, or to aspire to an office, that could be another thing, but he's already got the office, or he can decline the office. There's nothing blackmailing कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे, नौकरी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूं सर, मैं गुजारिश करता हूं, अब ये फैसला करना है। नहीं, मेरा मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं डाल रहे हैं, कह रहे हैं वकार अहमद तुम विल बी वेरी। देखें, मेरी गुजारिश फिर ये होगी कि मैं चाहता हूं कि आपने मुझे एक ड्यूटी असाइन की है। नहीं, चले करें। मैं कहता हूं सबको समझ आ जाए। चले करें। मेरा टारगेट ये है, मेरा पर्पस ये है। ठीक। हाँ, ये मेरा मकसद है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो नथिंग सर, आई एम एट योर डिस्पोजल। आगे जी सुनिए। आई रिटर्न टू माई ऑफिस इन दिस perplexed state of mind and called Mian Abbas. I repeated to him the orders of then Prime Minister verbatim. I was surprised to find that Mian Abbas was the least disturbed. He told me that I was not to worry about it, that he would see that the order of the Prime Minister would be duly executed, because he has already been reminded of this operation by my predecessor more than once.
Mia Muhammad Abbas was director operation in the FSF. After the Prime Minister has given me these orders, he kept on reminding me, this is very important, kept on reminding me and goading me for their execution. This was done by him personally as well as on the green telephone through Mia Saeed Ahmed and through his assistant Bajwa. Kaisi interesting baat. बाजवा भी आ गए, बाजवा भी आ गया, सईद भी आ गया, ग्रीन लाइन भी आ गई, और फिर भी साहब ने दोबारा को रिमाइंड कर रहे हैं प्लीज कर दो और वो एक्सेस पे नहीं है ना. आपने एक काम जिससे करवाना वो तो बाहर बैठा हुआ है और बाहर राब्ता ही नहीं का है, वो उधर ही है, उसको बुला लेते. अब आगे देखिए सर. In August 1974, Mr. Ahmed Raza Kasuri was sniped at in Islamabad. Before the Islamabad incident and after the Prime Minister has spoken to me, I was asked by the Prime Minister to take care of Mr. Ahmed Raza Kasuri, who was likely to be Quetta. अब ये क्वेटा का इंसिडेंट है क्योंकि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं. क्वेटा में शायद अच्छे लोग हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये बात फिर इसका तो मेरा ख्याल में कुछ नहीं इम्पोर्टेंस नहीं है. अब मैं आप सही समझे हैं जी, आप सही समझे. अच्छा किसके बारे में? क्वेटा के बारे में. अब पेज 74 पे जनाब. On the 11th of November 1974, I was at Multan. So was Mr. Zulfiqar Bhutto. Very early in the morning, he rang me up. He said to me, "Your Mia Abbas has made complete balls of the situation. Instead of Mr. Ahmed Raza Kasuri, he has got his father killed." I was taken by surprise. अब ये सरप्राइज में आ गया जो अदरवाइज कंस्पिरेसी में है, तो उसने कहा कि मियाँ अब्बास ने ये क्या किया है. आगे कहते हैं, the Prime Minister hung up after telling me that he would summon me later. His ADC then called me at the residence of Mr. Sadiq Hussain Qureshi in Multan, where I was ushered into the presence of Mr. Bhutto, who had Mr. Sadiq Qureshi sitting with him. Most nonchalantly, Mr. Bhutto said to me, as if he has not talked with me before, "I heard Mr. Ahmed Raza Kasuri's father has been killed last night someplace in Lahore." I replied that I had also heard. Soon after that, when I returned to the headquarters, Mia Abbas informed me and reported me that his operation has been successful, but instead of intended victim, his father Nawab Muhammad Ahmad Khan has been murdered at Lahore. As far as I remember, I left Multan in the same afternoon. I was summoned by Mr. Bhutto on our return to Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. I said to him, "This is very important, sir. Kindly look at a man." He said to me, "At your behest," I said to him, "At your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Abbas, who has already your direction through my predecessor, and the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore." ये इनके प्रीडिसेसर कौन थे? वाना साहब थे जी. कोई वो पेश हुए? वो फौत हो गए थे. नहीं, इसमें मेरे ख्याल में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन से दौरान या पहले फौत हो चुके थे, वो रिकॉर्ड पे आ गया. अब देखिए बंदे का किरदार कैसा है. एक तरफ कहता है जी सुन के तो मैंने कहा मैंने नहीं करना, मगर मैंने कन्वे कर दिया. दूसरी तरफ कहता कि नहीं. अगला बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे भी अगला जी, वो असली बात आपने नहीं पढ़ी. वो पढ़ देता हूँ जनाब. पढ़ दीजिए. पढ़ देता. My parents hail from Kasur. My father and Mr. Ahmed Raza Kasuri's father were great friends. I had often met the deceased at my late father's house in Model Town, Lahore. We, the two families, had excellent relations. Any grudge or any motive on my part or that of my family against Nawab Muhammad Ahmad Khan or Mr. Ahmed Raza Kasuri or any member of that family never existed. नहीं, अगर इन बात मान लेते हैं दोस्ती थी, तो बुनियादी फर्ज था दोस्त का कि जाके फौरन इतला देता.
کہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، یہاں سے غائب ہو جاؤ، چھپ جاؤ، کچھ کر لو، جان بچا لو. یہ تو کہنے میں بہت دوست تھا ان کا. میں تو ابھی تبصرہ کر نہیں رہا، میں تو نہیں، میں سوچ رہا ہوں یا تو کہ میں دوست نہیں تھا. بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. اور یہ بات چلیں پرائم منسٹر کو نہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوست کو تو بچا سکتے ہیں. پرائم منسٹر کو پہلی میٹنگ میں کہہ دیتے کہ جناب یہ کسی اور، ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو چنا ہی نہیں جا سکتا اس ٹاسک کے لیے. پریزیڈنٹ کے پاس چوائس کیا تھا، کس کس کو وہ رکھ سکتا تھا، وہ ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں میرے خیال میں کل بتاؤں گا. Although at the meeting I had with Mr. Bhutto after the murder, he piped on after hearing me there, and were other occasion on which he continued to goad me into getting Mr. Ahmed Raza Kasuri's assassination. Categorically said no. After that, attempts were made on my life, threats were held out to me, attempts were also made to kidnap my children from HSN College, Lahore. There were repeat performance of poisoning my food at Chamba House, Lahore, and I discovered that some of my own subordinates seems to have been bought over or won over. I had seen them lurking around the place where they should not have been when I آگے یہ کہتا ہے جی میں کسٹڈی میں لیا گیا اور یہ ہوا وہ ہوا، میں نے بیان دیا، وہ ریلیونٹ نہیں. اب صاحب اس میں کل پھر ڈیٹیل سبمیشن کر دیتا ہوں سارے ایشو پہ. ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح. کیونکہ اب اس کو بہت ہی یہ امپورٹنٹ اس میں پوائنٹس ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیان ہے، اب اس کا ایک چیز آپ نوٹ کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں اس بیان پہ سزا ہوئی ہے تو اور کس بیان پہ؟ اور تو ایویڈنس سر، دوسری ایویڈنس تو ہے ہی نہیں. بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ تو ساری کروبریٹو ہے یا سپورٹنگ ہے. کروبریٹو نہیں ہے، سپورٹنگ ایویڈنس ہے، کروبریٹو نہیں ہے. اور تو اگر اس کو آپ نہیں مانیں گے تو ایویڈنس اس کو کوئی مان سکتا ہے؟ سر مجھے نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں، کوئی مان ہی لے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ امائکس ہیں نا، 4 لوگ تو مان چکے ہیں. آپ امائکس ہیں نا، اس لیے آپ سے ہم سوال پوچھ رہے ہیں. یہ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں، کوئی بھی سینسیبل بندہ، کوئی بھی لا نوئنگ بندہ، کوئی بھی ریزنیبل بندہ یہ نہیں مانے گا. سپریم کورٹ نے مان لیا. نہیں میاں عباس، اب میں سپریم کورٹ ہوں، پچھلے سپریم کورٹ کی بات. میاں عباس کا جو 164 کا بیان ہے اس میں اس نے بھٹو کے بارے میں کچھ نہیں کہا. نہیں، اس نے تو کہا کہ مجھے اس کے ذریعے ڈائریکشن، وہ تو اس کو تو مانا ہی نہیں گیا نا جی، اس کو تو نکال دینا. فرض کریں اگر مان لے اس کو، فرض کریں مانا ہی نہیں گیا، فرض کرنے فار دا ٹائم بینگ مان بھی لے. نہیں، اس نے نہیں یہ باتیں کی. اس کا کوئی اس کا بیان، کیونکہ جب کورٹ میں وہ تو وٹنس پیش ہی نہیں ہوا، وہ تو وٹنس پیش ہی نہیں ہوا. وہ اکیوز ہے نا، اکیوز ہو گیا نا. 164 کا بیان کیوں کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے 164 کا اس نے بیان کہا کہ مجھے ٹوانے نے کہا تھا، ٹوانے نے کہا تھا. کیا اس کا سٹیٹمنٹ، کیا میجسٹریٹ جس کے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی اس کو پروڈیوس کیا تھا؟ ہاں کیا. تو پھر تو اس کی کنفیشن ویدر وہ ریکارڈ پہ تو آیا نا، اس کی اپنی حد تک جائے گا نا کہ اس کے بیان کو ہائی کورٹ نے ریلائی نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ یہ ریزائل کر گیا اس سے، پھر وٹنس باکس میں بھی نہیں آیا نا. پھر کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا جب وٹنس باکس میں نہیں آیا تو 164 کی نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں کدھر ہے اسٹیٹمنٹ اس کا؟ کون سا؟ دوسرے اور اس کا 342 کا اسٹیٹمنٹ ہے نا، اس میں اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. 342 پڑھا جائے گا نا. اگر وہ ملک صاحب اگر وہ 164 کو آپ فار دا ٹائم بینگ ایکسپٹ کر لیں، اس کو اس میں کیا کہا بات کی؟ سر اس نے 164 کو اگر ایکسپٹ کریں گے تو اس نے ٹوانے کا ذکر کیا کہ مجھے ٹوانے نے کہا. ٹوانا تو آیا نہیں، ٹوانا تو فوت ہو گیا نا. اس کا ذکر کیا اس شخص کا، یہ محمود؟ ہاں کیا اس نے، تو کیا 164 میں کیا. وہ اس نے دیکھیں یہ بیسکلی جو چیز آئی وہ وہاں آئی اور یہ سپورٹیو ہے. نہیں سر، نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ ایویڈنس آپ تب مانیں گے کہ اف ہی از اے وٹنس. ملک صاحب اس طرح کر لیں، کل کر لیں. میں سر جواب دے لوں سر. نہیں تھک گئے سر. نہیں میں ذرا کلیئر کر لوں، وہ سپورٹنگ نہیں ہے، وہ تو مانی نہیں کسی نے. ایک شخص ایک اکیوز کنفیشن کر لے، بعد میں ریزائل کر لے، وہ نہیں مانا. آپ اس کے کنفیشن کو کنسیڈر نہیں
सर अगर तो वो मुल्ज़म को आप सजा देंगे ना कि उसके कन्फेशन में आप जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए रेलेवेंट है, उसको दूसरे के लिए रेलेवेंट नहीं करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा, मैं पैरा पढ़ दूंगा कि जो कन्फेशन मुल्ज़म का है वो उसके लिए है, ठीक है, वो दूसरे के लिए नहीं है। या तो उसको भी अप्रूवर बना लेते, मियाँ अब्बास को भी अप्रूवर बना लेते ना, फिर अब आप नहीं उसका बयान देख सकते। दूसरे के लिए वो सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है ना सर? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर उसको सजा दे उस पे, उसके ऊपर। आप सिर्फ इतना बता दें, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने इस पर रिलाई नहीं किया, उसको डिसबिलीव किया है? नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अपना रिजाइन कर चुका है तो हम इसको नहीं मानते, नहीं मानते नहीं पढ़ लीजिएगा, पैरा निकाल लीजिएगा, वो निकाल देंगे ना, वो जो जिन्होंने कन्फेशन किए हैं उस पे स्टेट ने अपील नहीं की। नहीं, कोई अपील नहीं की, उसकी क्या अपील करनी, स्टेट का तो काम हो गया, स्टेट का तो काम हो गया ना जी। सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, वो पोजीशन जो है ना उसका कन्फेशन उसके लिए है, उसका कन्फेशन उसके लिए है और उसको भी सजा उसके कन्फेशन पे नहीं मिली। आई एम एड्रेसिंग जस्टिस या साहब, उसको भी सजा अपने कन्फेशन पे नहीं मिली, दूसरी एविडेंस पे मिली है। बस ये देखना है कि क्या उसके बयान को 164 के बयान को अगर डिसबिलीव कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो। मैं यही तो कह रहा हूँ जी, 164 का बयान उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, मैं कल दिखा दूंगा आप। ठीक है सर। अगर तो उसकी एविडेंस को वो बिलीव कर लेते कि ये 164 सही है, ये रिजाइल भी कर रहा है तो नहीं, मगर हम उसके मजिस्ट्रेट के बयान की रिलाई करते हैं, ये नहीं है, उसको भी सजा उस पर नहीं हुई। सो मच सो कि सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि मैंने जो रिजाइल किया था गलत किया था, मैं फिर उसको सही मान रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, अब हम आपको मानते ही नहीं। उन्होंने उसको एंडोर्स कर दिया हाई कोर्ट के। हाँ, वो अभी पढ़ देता हूँ मैं उसको। इसमें देखिए, लर्नेड माइकस जस्टिस मंजूर मलिक commenced his submissions assisted by लिखे या ना? सर बिल्कुल, ये इन 3 बंदों ने बड़ा असिस्ट किया जी। एक तो नाम बताइए, नाम ये खुद ही अपने लिखवा देंगे, नाम लिखा, ये अंसर नवाज मिर्जा, नहीं हम इनका नाम लिख देंगे, ठीक है, assist by so and so. It is now 4 p.m. Full stop. During his submissions it was noted that there was also a complaint case before the High Court, but the learned amicus stated that filed by the complainant, namely Mr. Kasuri, but the learned amicus stated that he has not been able to locate a copy of the said complaint. Full stop. Mr. The complainant is in court, and in case he wants, and if he has a copy of the said complaint, he should file the same. ठीक है, इनके पास होगी ना? पता नहीं, आप अगर आपके पास है आप फाइल कर दीजिएगा। मैं सर एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं, अगर आपके पास है फाइल कर दीजिएगा, आपको भी सुनेंगे जी। Since the very prominent judges of this country who have died, it seems that they are on trial. I think notices should be given because somebody should protect their image and their reputation, because a lot is being said about them. They have died, but their successors should be given notice by this court. But let us correct that they are certainly not on trial. We are dealing as per our duty under the Constitution, attending to a presidential reference. These proceedings are broadcast live. These proceedings are well reported in the media. If anyone wants to come forward, they can do so. No, please ठहर जाइए. Now you said something. Now have the they may not come on their own, so let but if you formally invite them before this honorable court, and I think they were very prominent judges. See, when all of us must be in our 20s. At that time, they were the judges of this superior court. Dealing with law. And they are being discussed very negatively. No. So therefore, I personally feel
that notices should be given to the the relatives, their families. सूरी साहब, अगर आप समझते हैं कि कोई अगेंस्ट द रिकॉर्ड वो नेगेटिवली कुछ कहा जा रहा है तो आप उसका जवाब दे दीजिएगा, आप उनको रिप्रेजेंट कर लीजिए. It's not my